Hello everyone, in this video we will solve and compare these two questions. And the first question is integration of sin 3x by sin x and the second question is integration of sin 3x by cos x. So the procedure of these two questions are very similar. So let's start with the first question. And the first question is integration of sin 3x by sin x. To solve this question, सबसे पहले we will put the formula of sin 3x. So we know formula of sin 3x. Sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. ये फॉर्मूला है. सबसे पहले ये फॉर्मूला को यहां पे पुट करना है. सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 4 sin cube x डिवाइडेड बाई sin x. सो यहां पे हम sin x का फॉर्मूला पुट कर दिया. नाउ वी कैन ब्रेक दिस फ्रैक्शन. सो दिस विल बिकम 3 sin x by sin x minus 4 sin cube x by sin x equals to integration of 3 sin x by sin x minus 4 sin cube x by sin x. Now we can cancel this sin x and यहां पर एक sin x cancel हो जाएगा. And इसके बाद I will get 3 minus 4 sin square x. Now we can integrate this function. Now since यहाँ पे minus है, so integration of 3 minus integration of 4 sin square x बन जाएगा ये. So equals to integration of 3 dx minus integration of 4 sin square x dx. एंड नाउ ये जो 3 है एंड ये जो 4 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है. सो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin square x dx. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. सो इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 4 इंटू यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर sin square x? सो यहां पर sin square x प्लस cos square x इक्वल टू 1 इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है. sin square x plus cos square x equal to 1 इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है. We have to apply this formula 1 minus cos 2x is 2 sin square x. ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है. From here I can find sin square x and sin square x will be 1 minus cos 2x by 2. Sin square x will be 1 minus cos 2x by 2. इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करना है. So why we are not applying this formula? क्योंकि यहां पर already sin square x है. If I replace sin square x with 1 minus cos square x, I will get cos square x. And we cannot integrate cos square x directly. So इसको solve करने के लिए we will apply this formula, not this formula. So in place of sin square x, I will put 1 minus cos 2x by 2 and integration and dx. Now यहाँ पर 2 and 4 cancel होगा. So 2 and 4 cancel होगा. And 3x minus 2 into integration of 1 minus cos 2x dx ये मेरे को मिलेगा. Now since यहाँ माइनस है, so I will apply integration on both the function. So integration of 1 minus integration of cos 2x. So 3x minus 2 into integration of 1 dx minus integration of cos 2x dx. Again integration of 1 with respect to x is x. So 3x minus 2 into x integration of cos 2x. What is integration of cos 2x? So यहाँ पे substitute method यूज करना है and 2x को t लेना है. So let's say t equal to 2x. So what will be dt by dx? Derivative of t with respect to x is 2. From here I can find dx. dx will be dt by 2. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके and dx को यहाँ मल्टीप्लाई करके I will get dt by 2. So dx की जगह पर dt by 2 पुट करना है यहाँ पर and 2x की जगह पर t पुट करना है यहाँ पर. So this will become integration of cos t dt by 2. यहां पे क्या 1 by 2 है. सो 1 by 2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकता. सो 3x minus 2 into x minus 1 by 2 integration of cos t dt. Now what is integration of cos t? Integration of cos t will be sin t क्योंकि integration of cos x is sin x. Similarly integration of cos t with respect to t will be sin t. So अब यहाँ पे sin t पुट करना है. So 3x minus 2 into x minus 1 by 2 sin t. We will multiply these two inside every element. So I will get 3x minus 2 into x 2x plus यहाँ पे minus minus plus बन जाएगा and 2 into 1 by 2 is 1 into sin t. So sin t. And what was t? T was 2x. So we will put t equal to 2x and also यहाँ पे इसको solve करने पर I will get x. So x plus sin 2x. So ये है आंसर फॉर द इंटीग्रल ऑफ sin 3x by sin x. So integral of sin
3x by sin x is x plus sin 2x and plus c भी आएगा. So x plus sin 2x plus c is the answer for the integral of sin 3x by sin x plus c. This was the answer for the integral of sin 3x by sin x. So we can also check this answer. So how do we check this answer? So if integration of this function is this function, then derivative of this function should be this function. So derivative of x plus sin 2x plus c should be sin 3x by sin x. So by differentiating this function, we can check the answer. So let me show you. So equals to derivative of x plus derivative of sin 2x. क्योंकि यहाँ पे plus है. So derivative of x plus derivative of sin 2x. I will get this. So derivative of x will be 1 plus derivative of sin 2x will be cos 2x into 2. And from here we can apply the formula of cos 2x. So cos 2x have multiple formulas like cos square x minus sin square x, then 2 cos square x minus 1 and then 1 minus 2 sin square x. But we will apply the third formula which is 1 minus 2 sin square x. So this will become 1 plus 2 into 1 minus 2 sin square x. And if I multiply these two inside the bracket, I will get 1 plus 2 minus 4 sin square x. And this 1 plus 2 will become 3. So 3 minus 4 sin square x. And if I multiply sin x in the numerator and in the denominator, so basically we are multiplying and dividing sin x. So यहाँ पे हम sin x multiply and divide कर दिया. And if I multiply this sin x inside the bracket, I will get 3 sin x minus 4 sin cube x by sin x. And 3 sin x minus 4 sin cube x is sin 3x by sin x. इसकी जगह पर sin 3x आ गया and denominator में sin x. So derivative of x plus sin 2x is basically sin 3x by sin x. We can write here that derivative of x plus sin 2x plus c is sin 3x by sin x. So derivative of x plus sin 2x plus c is sin 3x by sin x. Therefore our answer is correct. क्योंकि if integration of this function is this function, then derivative of this function should be this function and we got this. Therefore our answer is correct. You might wonder यहाँ पे हम c क्यों नहीं लिया. ठीक है, यहाँ पे हम c क्यों नहीं लिया? क्योंकि derivative constant will be 0. इसीलिए यहाँ पे हम c नहीं लिया. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली प्लस 0 मिलेगा मेरे को. So c लेने का कोई फायदा नहीं है. Now we'll move on to the next question. So to solve this question again we will use the formula of sin 3x. And what was sin 3x? So sin 3x was basically 3 sin x minus 4 sin cube x by cos x. So यहाँ पे formula apply कर दिया. Again we will break this fraction. So this will become 3 sin x by cos x minus 4 sin cube x by cos x. So integration of 3 sin x by cos x minus 4 sin cube x by cos x dx. Now here sin x by cos x is basically tan x. So इसको हम लिख सकते हैं 3 tan x dx. हम simultaneously ये जो इंटीग्रेशन है दोनों में अप्लाई कर देगा. ठीक है, so minus integration of 4. So integration of 4 sin cube x by cos x dx. So now we will take this constant outside and यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा? tan x रिमेनिंग रहेगा. So integration of tan x will be log sec x. So हम 3 बाहर निकाल लिया. अंदर में क्या रहेगा? tan x रिमेनिंग रहेगा. माइनस यहाँ पे 4 हम निकालते हैं एंड हम sin क्यूब x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin x बाई cos x. ऐसा हम लिख सकते हैं इसको. एंड sin स्क्वायर x को लिख सकते हम 1 माइनस cos स्क्वायर x. सो माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई cos x इंटू sin x. ऐसा हम लिख सकते हैं इसको. And we will apply the formula of integration of tan x. Integration of tan x is log sec x. So integration of tan x is log sec x. And to solve this integration, we will use substitution method. We will assume t equal to cos x because यहाँ पे sin x dx है. So by differentiating cos x, I will get this sin x dx. Therefore, we will take t equals to cos x. So t equals to cos x. So derivative of t with respect to x will be minus sin x. So यहाँ पे जो माइनस 1 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकता एंड dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता. सो आई विल गेट dt इक्वल्स टू sin x dx एंड माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाना था तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा. सो sin x dx इज बेसिकली माइनस dt. नाउ वी विल पुट दिस एंड दिस वैल्यू. सो आई विल गेट इक्वल्स टू 3 log sec x minus 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर बाई t माइनस dt. नाउ ये जो माइनस 1 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं एंड इसको प्लस बना सकते हैं. सो
3 log sec x plus 4 integration of 1 minus t square by t into dt. माइनस 1 बाहर निकालकर हम माइनस को प्लस बना दिया. Now we will break this function. We will write this function as 1 by t minus t square by t. So plus 4 into integration of 1 by t minus t dt. क्योंकि t square by t will be t. And यहाँ पे क्या है 3 log sec x. Now यहाँ पे माइनस है, so इंटीग्रेशन दोनों में अप्लाई हो जाएगा. So equals to 3 log sec x plus 4 integration of 1 by t dt minus integration of t dt. So what is integration 1 by t? It is log t plus 4. So यहाँ पे बाहर में 4 भी मल्टीप्लाइड था, so 4 भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी 4 आएगा. So 4 log t मिला मेरे को and minus 4 and integration of t will be t square by 2. So minus 4 t square by 2 and यहाँ पर क्या है 3 log sec x. What was t? T was basically cos x. So let's put t equal to cos x. This will become 3 log sec x minus 4 plus 4 log cos x minus 4. So यहाँ पे 4 by 2 will become 2. So let me write 2 and t equal to cos x and square plus c. Now we can add these two function. ये दो function को हम add कर सकते हैं. But for that इसको change करना पड़ेगा. So how do we modify log sec x? So log sec x can be written as log 1 by cos x. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ and 1 by cos x को लिख सकता हूँ cos x power minus 1 and power में जो minus 1 इसको हम सामने लेके आ सकता हूँ by the property of log. So it will become log cos x and modulus. So log sec x is basically minus log cos x. So यहाँ पर log sec x की जगह पर हम पुट करेगा minus log cos x. So equals to minus 3 log cos x plus 4 log cos x minus 2 cos square x plus c. ठीक है. And 4 log cos x minus 3 log cos x will be log cos x. So equals to log cos x minus 2 cos square x plus c. ठीक है. So ये है आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x by cos x. So we got integration of sin 3x by cos x log cos x minus 2 cos square x plus c. ये मेरे को मिला after the integration. Now again we can verify the solution. How do you verify the solution? By differentiating this function. If we get this function, then our answer is correct. So differentiation of log cos x minus 2 cos square x plus c. If I get differentiation of this function as sin 3x by cos x, the answer is correct. So let me show you the differentiation of this function. So equals to, again यहाँ पे क्या है माइनस है, so d by dx दोनों पे अप्लाई हो जाएगा. So d by dx of log cos x minus d by dx of 2 cos square x and d by dx of constant will be 0. Now यहाँ पे chain rule अप्लाई करना है. So derivative of log cos x will be 1 by cos x into derivative of cos x is minus sin x minus 2. यहाँ पे 2 constant है वो बाहर आ जाएगा and derivative of cos square x will be 2 cos x into minus sin x. So यहाँ पर chain rule अप्लाई किया. So log x का derivative 1 by x and cos x का derivative minus sin x. Similarly cos square x है, so which is cos x whole square. So cos x को x assume कर लिया. So cos x का square का derivative 2 cos x into cos x का derivative minus sin x. Now let's simplify this function. So I will get minus sin x by cos x plus 4 sin x cos x and यहाँ से हम sin x कॉमन ले सकते हैं. So यहाँ पे एक x मिसिंग है. So this will become sin x into minus 1 by cos x plus 4 cos x. Now यहाँ पे हम इसका LCM ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा cos x into 4 cos x which will be 4 cos square x. So sin x minus 1 plus 4 cos square x by cos x. Now what is cos square x? Cos square x is basically 1 minus sin square x because sin square x plus cos square x equal to 1. So cos square x will be 1 minus sin square x. So let me put 1 minus sin square x in place of cos square x. Minus 1 plus 4 into 1 minus sin square x by cos x. Now यहाँ पर ये ब्रैकेट को ओपन करना है एंड 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. So sin x into minus 1 plus 4 minus 4 sin square x by cos x. 4 minus 1 is 3. So sin x 3 minus 4
sin square x by cos x. And now I can multiply this sin x inside every element. So this will become 3 sin x minus 4 sin cube x by cos x. ठीक है, sin x को मल्टीप्लाई किया ये दो टर्म के साथ, sin x into 3 will become 3 sin x, sin x into 4 sin square x will become 4 sin cube x, and 3 sin x minus 4 sin cube x is sin 3x by cos x. ठीक है, so derivative of that function is sin 3x by cos x. So derivative of this function is sin 3x by cos x. So यहाँ पे आएगा sin 3x by cos x. So integral of this function was this function. So derivative of this function was this function. Therefore, our answer is correct. So this is how you find integral of sin 3x by sin x and sin 3x by cos x. And also I have shown you how to check your answer. So this was the two problem which was based on integrals using trigonometric identities. So this is it for the video. We will solve more questions in the upcoming video. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.